Okay, greetings to everyone. Now we are going to observe the great occasion of the birthday of Mahatma Gandhi. On this occasion, I would like to invite our Honorable Principal Sir to light the lamp and offer flower to Mahatma Gandhi. Okay, sir, please. बड़ा भाषण होती है Once again, very good morning to all of you. As we all know, today is the birthday of two great men of our country. First of all, great Mohandas Karamchand Gandhi, who is very well known to all of us as Mahatma Gandhi. We fondly call him as Bapuji also. He was a great freedom fighter during the freedom moment of our country from British rule. And his life was in such a manner that nowadays he has been being worshipped like than God. Like God, we are also worshipping and praying and following his principles. He was such a great man. He believed in simple living and high thinking. Mahatma Gandhi ji was born in Porbandar in Gujarat state on 2nd October in 1964. He was a very simple boy during his childhood. Later he developed and studied in foreign countries also and became a lawyer. He returned to India having finished his studies in England and took part in freedom movement of our country. His principle of truth, non-violence, all these moved the heart of all the people of our country. Not only the people of our country but also the people of the whole earth. We are moved in his principles also. Because truth has such a power there. Everybody, all of us, we know truth is God. He said this. Mahatma Gandhi also told, untouchability is a crime against God. He believed in peace and non-violence, and he was a great lover of truth also. And see, his life is showing path to all of us now to guide and to maintain a very peaceful and non-violent life on the whole earth also. Now the whole earth is observing and following his guidelines, his principle. And simultaneously, it is also the birthday of Lalbahadur Shastri ji. He was the second Prime Minister of our country. He was born on 2nd October in 1904. And he was such a great man also. He was very simple by nature, and he felt a selfless life. He was maintaining a very selfless life. When I was in standard 5 or 6, I was studying that once he had to swim the river to reach his school because he had no money with him to pay the fare of the boat. So he was such a person. He didn't like a corruption. He was waiting till the salary he would get to purchase slates, clothes for his wife and children. He was such a man. Those great men are very much inspiring to all of us. We should follow their life. This is the thought of this day. And that's why they have been worshipped by the people of our country. Today, all the people across our country are also observing his birthday, the birthday of both the great men, Pandit
Lalbahadur Shastri and Bapuji Mohandas Karamchand Gandhi, as his full name was. Okay, I would not like to speak more. Thank you all very much. Both these great men of our country, leaders of our country, and not to take much of time, so I just want to invite our dear esteemed teacher Rita Madam to speak few words as relevance of this day. आज के दिन एक शुभ दिन है। इस दिन को हम महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। आज 2 अक्टूबर। इस दिन को हम सबके याद के लिए मनाया जाता है। महात्मा गांधी को हम सब जाति के पिता के रूप में मानते हैं, जो इस सत्य को अहिंसा की राह पर चलते हैं। कभी किसी को भी परेशान नहीं देने। एक बार के सभा में महात्मा गांधी गए थे। इनके तन पर कपड़ा नहीं था, ये सादा सीधा जीवन जी रहे थे। एक आदमी ने पूछा, इतना बड़ा है बापू, लेकिन इनके तन पर कपड़ा नहीं है। तो गांधी जी ने शासक उत्तर दिए थे, मेरे तन में कपड़ा इसीलिए नहीं कि तुम जो साफा पहना है इसमें 10 आदमी का कपड़ा लगा है। तो सबके तन को छिपाने के लिए मैं सारे कपड़ा भी देती हूँ। देखा पापा का लिखती है, तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। A lot of thanks to you, madam, for saying these inspiring words. Now I request one of our most talented, dear esteemed teachers, Susil sir, to speak about the relevance of this day. Susil sir, please. Principal sir, colleagues, today the birthday of Mahatma Gandhi. He is known as national father. Mahatma Gandhi was born 2nd October 4 काठियावाड़ गुजरात। छोटा सा बात बताऊं, बचपन में छोटा सा स्टोरी। गांधी जी जब 7-8 साल के थे, तो 8-10 साल के थे, एक दिन गांधी जी इनके बड़े भाई दोनों और इनके दोस्तों के साथ मिलकर एक नॉनवेज फीस्ट किया था। जो फीस्ट करने के लिए या रोजी जो फीस्ट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। तो गांधी जी क्या करते थे, गांधी जी उनके बड़े भाई एक अंगूठा पहनते थे। ये अंगूठा को बेचकर दोनों भाई मटन भूजे। लेकिन गांधी जी का ये एटीट्यूड नहीं था कि पापा को मामा को ये झूठ बोलकर ये सब काम करना। फीस्ट कर दिया, खाना खा लिया, लेकिन रात भर नींद नहीं आया गांधी जी को। गांधी जी को लगा कि ये जो बकरी मेरे पेट में चिल्ला रहा है, मैं नहीं कर रहा, फिर भी झूठ तो बोला है। तो सुबह उनके पापा थोड़े से गुस्से वाला आदमी थे, पापा को सामना करना डर लगता था। इसीलिए गांधी जी ने क्या किया, एक चिट्ठी लेकर पापा के टेबल में रख दिया। सुबह वो जब अखबार पढ़ेंगे तब पापा के नजर में आएंगे, पापा पढ़ेंगे। तो चिट्ठी लेके लिख दिया और टेबल में रख दिया। इनके पापा ने जब अखबार देखा तो चिट्ठी को भी देखा, चिट्ठी पढ़ा, क्या होगा बता सकते हो? गांधी का हालत क्या होगा? उनके परिवार थे ना वेजिटेरियन। पहले तो गांधी जी नॉन वेज खा लिया, फिर भी अंगूठे बेचकर पापा को झूठ बोला, क्या होगा? गांधी जी के पापा ने
गांधी जी को कुछ गाली भी नहीं दो, मारा भी नहीं, इसके गोद में बिठा कर प्यार से समझो कि ये जो सच तुम्हारे अंदर में, आज जो सच तुम बोलने का जो हिम्मत रखा ना जिंदगी भर वही सच रखना चाहिए और सच्चाई के राह पर चलना चाहिए। उठा गया मैं इतना दुखी नहीं हूँ, लेकिन यदि ये झूठ तुम मुझे बोला होगा तो मुझे ज़्यादा दुख लगा। ये गांधी जी का एक झूठ है और गांधी जी के बारे में वो थोड़ा सा बताता था। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे क्या करने के लिए, बाइक ट्रेन करने के लिए, वहां गए थे क्या करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन वहां जाकर देखा कि अफ्रीकन एंड इंडियन Indians were ill-treated by the British government। उन लोगों को एक बैच पहनना पड़ता था जिसे कहते पर्चमेंट, ताकि वो पहचान जाए कि आइडेंटिफाई हो जाए कि इंडियन एंड ब्लैक पीपल। They were restricted entering plane, ट्रेन, होटल, स्कूल। जिस स्कूल में ब्रिटिश के बच्चे पढ़ते थे उस स्कूल में उन बच्चों को मना है ताकि वो रात 8 बजे के बाद वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उनके गले में या हाथ में पर्चमेंट था, जिसके कारण वो आइडेंटिफाई हो गए। ये गांधी को बहुत दुख लगा और वहाँ पर गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया, जिसके जोहान्सबर्ग के रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को धक्का देकर ट्रेन से गिरा दिया गया था। आज जोहान्सबर्ग में गांधी जी का मूर्ति है। ओके, तो वहाँ से सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया और इसी सत्याग्रह से गांधी जी सफल होने के बाद गांधी जी ने देख के गया था इंडिया में ऐसा हो रहा था, लेकिन गांधी जी तब तक वो लीडर नहीं थे कि वो देश के लिए सेवा करेंगे, फ्रीडम फाइटर बनेंगे, ये नहीं सोचा था। गए थे पैसा कमाने के लिए, लेकिन गांधी जी ने सोचा ये जो बड़ी वकालत काम है ना, झूठ बोलना पड़ेगा, सच को झूठ बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए गांधी जी ने वहाँ सत्याग्रह से जब सफल हो गए तो इंटरनेशनल लीडर बन गए और वहाँ से वापस आके 1915 में इंडिया वापस आ गए। और गांधी जी ने पहला आंदोलन गुजरात खेड़ा में स्टार्ट कर दिया। गुजरात खेड़ा आंदोलन बच्चे पढ़े होंगे, खेड़ा आंदोलन जो उसी समय गुजरात में प्लेग चल रहा है। प्लेग चूहा काटने से प्लेग होता है। प्लेग में बहुत सारे जो वर्कर ना इंडस्ट्री वर्कर मर गए थे, उन लोगों को बोनस देने के लिए मना कर दिया था। उसी लोगों को बोनस देने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया और जो सेक्टर हंगर स्ट्राइक मतलब अनशन उपास में बैठ गए। तो मिल मालिक ने मजबूर होकर बोनस दिया। ये आंदोलन में सक्सेस होने के बाद गांधी जी बन गए नेशनल लीडर ऑफ इंडिया। इसके बाद चंपारण आंदोलन पड़ा होगा और सर बोल चुके हैं जो शास्त्री के बारे में। लालबहादुर शास्त्री स्कूल नहीं सर बोला सही या गलत होने के मुझे पड़ा था। लालबहादुर शास्त्री के मेला देखने गए थे गंगा पार करके। सबसे बढ़िया लीडर, जितने सारे प्रधानमंत्री हमारे देश में सबसे अच्छा लीडर लालबहादुर शास्त्री। ही वॉज ए ऑनेस्ट पर्सन। इनके कोई गवर्नमेंट देगा एडजस्ट करे, इनके खाते में कुछ भी मैंने अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं था जब वो प्रधानमंत्री थे या प्रधानमंत्री जाने के बाद एक अकाउंट में एक भी पैसा नहीं था। वो मेला देखने गए तो वापस आते समय ना इनके पास पैसा नहीं था वोट बनाने के लिए। बच्चों को साथियों को बोला तुम आगे चलो पीछे जाओ। वो आने के बाद तैर कर चले। ये देश का प्रधानमंत्री थे लालबहादुर शास्त्री। और पीछे सब बोलेंगे जितना मुझे मालूम था बोल गया, कोई गलत होगा सारी बात बोलेगी। Thank you, Susan sir, to speak such nice words, such inspiring and such peaceful and tranquilizing words. And right now I will be. So Sit down. may I have your attention, please? My dear Santi, may I have your attention, please? Now I request my dear student, so namely Ritika of class 10th, to speak
few words on the relevance of this day. Ritika, please. So a big round of applause for Ritika. नमस्कार आप सभी को। सम्मानीय प्रिंसिपल सर, मेरे आदरणीय शिक्षक जी और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम हमारे प्यारे बापू जी का जन्म दिवस पालन कर रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा बात कहूँगी। वो बारिस्टर की पढ़ाई और प्रैक्टिस करने के लिए वो मतलब साउथ अफ्रीका गए थे। वो फर्स्ट क्लास टिकट मतलब कटवाने के बाद भी उन्हें ट्रेन से निकाल दिया गया था, क्योंकि तब इंडियंस को ब्लैक पीपल के नाम से जाना जाता था। तो जब उन्हें निकाल दिया गया था ट्रेन से, तो वो मतलब उनका एक मेन मोटो था कि वो कभी मतलब वायलेंस क्रिएट नहीं करेंगे, जो करेंगे नॉन वायलेंस होके करेंगे। तो वो उन्हें एक आइडेंटिटी उनका था कि इंडियंस को एक आइडेंटिटी मिलता था। वो कांग्रेस पार्टी और जो इंडियंस थे एक सभा किए और वो आइडेंटिटी को जलाए। तो साउथ अफ्रीका की पुलिस उन्हें मारे, क्योंकि वो जब आइडेंटिटी जला रहे थे वो मतलब कानूनी तौर पे ये मतलब ठीक नहीं था। वो एक जलाए मार खाए, दूसरा जलाए मार खाए, फिर भी वो एक बार वो पुलिस के ऊपर हाथ नहीं उठाए, क्योंकि उनका मेन मोटो था नॉन वायलेंस को लेकर। खून से लथपथ हो गए, पीट के पुलिस ने वो जलाते रहे। पुलिस सोची कि वो कांस्टेबल जो था वो सोचा कि नहीं मर जाए, चुप हो जाएगा, डर जाएगा। फिर 2 लठ मार दिया, फिर 2 लठ मार दिया, फिर गिरे, फिर तीसरे बार में इतने जोर से मार दिया तो फट के खून बहने लग गया, सर फट गया गांधी जी का। गांधी जी नीचे गिर गए, बेहोश हो गए। बट द लास्ट अटेम्प्ट कि मैं अन्याय को कभी सहूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए, मेरी जान चली जाए, अन्याय को कभी सहूंगा नहीं, भले ही मर जाऊं। उनकी पत्नी खड़ी थी, सब लोग आंसू में भरे हुए थे। महात्मा गांधी पूरा एकदम कूल लोग है ना, वो एक पर्चे में तो सुशील साहब ने कहा पर्च में एक लिखाई भी होती थी उनके, राइटिंग्स होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, बस सारे जलाते रहे। दूसरे बंदों ने भी करा था ना, तो सारे एक लेके जलाते रहे। असो यू कैन कंटिन्यू। तो 1915 में वो सक्सेसफुली सत्याग्रह का जो मूवमेंट है वो सक्सेसफुली जीत के आए थे इंडिया को। तो इंडिया में जब देखे कि वो ब्रिटिश सरकार ऐसे दबाव डालते थे, मतलब उनका एक दबदबा बहुत मतलब इंडियंस के ऊपर था, तो ये देख के वो उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो वो 1917 को एक मूवमेंट स्टार्ट किए जो कि चंपारण में हुआ था। फिर ऐसे 3 मूवमेंट हुए इंडिया में 1917 में, एक चंपारण, एक खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में और एक क्लोज कर Gandhi ji used to emphasize that it's a soul force. आप सुशील ये के बारे में, सत्य ही सबसे बड़ी ताकत है। तो सत्याग्रह में जी सुशील सर, सत्य के प्रति आग्रह, वो कहते हैं कि सत्याग्रह जो है आत्मा की ताकत है और आत्मा जो है सत्य के ऊपर टिकी हुई है, इसीलिए उसका नाम पड़ा हुआ है सत्य के प्रति आग्रह। जो अत्याचारी है, जो जुल्म करता है, उसके लिए भी सत्याग्रही के मन में, आत्मा में कोई बुरी भावना नहीं रहती है। बस यही कोशिश रहती है कि अत्याचारी समझे, जाने सत्य क्या है, और सत्य को जान लेगा तो अत्याचार करना छोड़ दे। गांधी की ये एक पैसिव रेजिस्टेंस नहीं है, सीधा लड़ाई है। गांधी जी had explained this, क्लास 10 की किताब में है, उनकी स्पीच की एक छोटी सी हिस्सा आप देख लीजिएगा। गांधी जी कहते हैं कि ये सीधा लड़ाई है, अत्याचारी के साथ सीधा लड़ाई है, परंतु एडवर्सरी, अत्याचारी के ऊपर कोई बुरी भावना नहीं है, अत्याचारी को नष्ट करना नहीं है। साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने भी यही फॉलो करा था, एक रेनबो नेशन बनाया था। गांधी जी के प्रिंसिपल, सुनना साहब ने बहुत बातें कही हुई है गांधी जी के बारे में।
छोटी सी स्पीच थी सुनना सर की, बट बहुत गहरी बातों के ऊपर उन्होंने उजाला डाला है ना। तो साउथ अफ्रीका में दुनिया भर के लोग गांधी जी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। नेल्सन मंडेला उनके फुटप्रिंट पे चलने वाले हैं, एक बहुत बड़े लीडर था, 28 साल तक जेल में रहे, फिर साउथ अफ्रीका आजाद भी, यही प्रिंसिपल था, सत्याग्रह, है ना। सो विद दिस अलाउ मी टू क्लोज दिस सेशन। सो थैंक यू ऑल, नमस्कार। Today, we gather here to pay our heartfelt tribute to one of India's most humble and dedicated leaders, Lalbahadur Shastri ji. On this special occasion, we remember and celebrate the life and legacy of a man who personified simplicity, integrity, and unwavering commitment to the welfare of our nation. Lalbahadur Shastri ji's journey from a small village in Uttar Pradesh to become the Prime Minister of India is a testament to the power of hard work and dedication. He was a man of the people, born in a humble family, who rose through the ranks of our political system based solely on his merit and dedication to the service of the nation. Shastriji's tenure as the Prime Minister of India was marked by some of the most challenging times in our history. It was during his leadership that India faced the grave threat of food scarcity and the Indo-Pak War of 1965. In the face of adversity, he displayed remarkable courage and resilience. His famous slogan, Jai Jawan, Jai Kisan, encapsulated his commitment to both the soldiers defending our borders and the farmers feeding our nation. He urged us to remember the sacrifices of our soldiers and the hard work of our farmers, recognizing their vital roles in our nation's progress. But Lalbahadur Shastri ji's greatness was not just about his leadership during times of crisis. It was about his simplicity, his humility, and his integrity. He was a leader who led by example, living a life of frugality and honesty that earned him the respect and admiration of people from all walks of life. Today, as we remember Shastri ji, let us also reflect on the values he stood for. He believed in the power of self-reliance and hard work, in the importance of honesty and integrity in public life, and in the idea that a nation's strength lies in the unity of its people. Shastriji's legacy continues to inspire us to this day. In a world often characterized by complexity and materialism, his life serves as a reminder that true greatness lies in simplicity and service to others. His unwavering commitment to the welfare of our nation and its people is a source of inspiration for all of us. On this occasion, let us renew our commitment to the values and principles that Lalbahadur Shastri ji lived by. Let us strive for a more self-reliant, united, and prosperous India, just as he envisioned. In conclusion, let us remember Lalbahadur Shastri ji with gratitude and admiration. His life and his leadership are a beacon of hope and a source of inspiration for all of us. May his legacy continue to guide us on the path of progress and prosperity. Thank you and Jai Hind. Today, on this auspicious occasion of Gandhi Jayanti, we gather here to commemorate the life and legacy of one of the greatest leaders the world has ever seen, Mahatma Gandhi. It is a day to reflect upon the teachings and ideals of this remarkable soul who not only led India to freedom but also showed us the path to a more compassionate and just world. Mahatma Gandhi
fondly known as Bapu, was a beacon of hope in a world marred by conflict and injustice. His life was a testament to the power of non-violence, truth, and unwavering determination. He believed that change begins within each one of us and that we must be the change we wish to see in the world. Gandhiji's philosophy of non-violence or satyagraha was not just a political strategy but a way of life. He demonstrated that even in the face of the most oppressive regimes, it is impossible to resist injustice through peaceful means. His commitment to truth and non-violence inspired millions, not only in India but across the globe, to strive for a more harmonious world. Today, as we remember Gandhiji, we must also acknowledge that his teachings remain as relevant as ever. In a world where conflicts and divisions persist, his message of unity, tolerance, and love for all humanity holds the key to a better future. His belief in the inherent dignity of every individual reminds us that we must stand up for the rights and dignity of every person, regardless of their background or circumstances. Gandhi Jayanti is not just a day to celebrate history, but a day to renew our commitment to the principles of he lived by. Let us pledge to follow the path of truth, non-violence, and compassion in our own lives. Let us resolve to work towards a world where justice prevails, where the weak are protected, and where peace reigns. In our increasingly interconnected world, the values that Mahatma Gandhi stood for are more critical than ever. We must remember that change begins with us, with our actions, and with our choices. As we celebrate this day, let us reflect on what each of us can do to carry forward the legacy of Gandhiji. In conclusion, let us remember the words of Mahatma Gandhi himself. You must be the change you wish to see in the world. On this Gandhi Jayanti, let us be that change and let us strive to make the world a better place for generations to come. Thank you, and may the spirit of Mahatma Gandhi continue to inspire us all. My dear esteemed teachers, my dear students, and the whole of the dignitaries present over here, today we gather here to celebrate Swachh Bharat Divas, a day dedicated to cleanliness and sanitation. It is a day to reflect on the progress we have made and the challenges that lie ahead in our mission to create a cleaner and healthier India. It is also a day to renew our commitment to the ideals and goals of the Swachh Bharat Abhiyan. Swachh Bharat Abhiyan, launched on October 2nd, 2014, was not just a government initiative but a nationwide movement. It was a call to action to every citizen of India to take responsibility for our surroundings, to ensure proper sanitation, and to make cleanliness a way of life. The fact that we celebrate this day on the birth anniversary of Mahatma Gandhi, who believed cleanliness to be next to godliness, is a powerful reminder of the importance of this mission. Over the years, we have made significant progress in achieving the goals of Swachh Bharat Abhiyan. Millions of toilets have been constructed, villages and cities have become cleaner, and awareness about sanitation and hygiene has increased. However, we must remember that our work is not yet complete. There are still areas that lack access to proper sanitation facilities, and the challenge of waste management remains. Swachh Bharat Divas is a day for us to acknowledge the work that has been done and to rededicate ourselves to the work that remains. It is a day to recognize
the efforts of countless sanitation workers who toil day in and day out to keep our streets clean. It is a day to honor the countless volunteers and organizations that have contributed to the cause of cleanliness and sanitation. But more than anything else, Swachh Bharat Divas is a day to remind ourselves of the impact that cleanliness has on our lives. Cleanliness is not just about aesthetics, it is about health, dignity, and quality of life. It is about ensuring that our children grow up in an environment free from disease and pollution. It is about respecting the dignity of those who work tirelessly to keep our surroundings clean. As we celebrate Swachh Bharat Divas, let us also remember that cleanliness is not just the responsibility of the government, it is the responsibility of every citizen. Each one of us has a role to play in this mission, whether it's by disposing of waste responsibly, by maintaining personal hygiene, or by educating others about the importance of cleanliness. We can all contribute to building a cleaner and healthier India. In conclusion, let us use the Swachh Bharat Divas as an opportunity to reflect on our individual and collective responsibilities towards cleanliness and sanitation. Let us rededicate ourselves to the cause and work towards making Swachh Bharat a reality. Together we can create a cleaner, healthier, and more prosperous India for generations to come. Thank you, and let's continue to strive for a Swachh Bharat. Jai Hind.